कि एक ट्रांसपेरेंट वे में सभी नागरिक उसको देख सकें, समझ सकें और किसी को कोई भी अगर ग्रीवेंस हो, अगर कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट को ग्रीवेंस ऑफिसर के पास भी रेज कर सके। इसीलिए जिन सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज का आपने नाम लिए उन सब की मेटा, फेसबुक जो पहले था, ट्विटर, जो भी आपने नाम लिए, इन सब की कंप्लायंस रिपोर्ट्स में डाउनलोड करके लेके आए हूँ। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू। माननीय सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या बात सही है कि आईटी डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम होस्टेड डॉक्टर्ड ल्यूड पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स एम्ड एट इंसल्टिंग एंड ऑक्शनिंग मुस्लिम विमेन। तो ऐसे वेबसाइट्स के खिलाफ में या वैसे लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की सरकार ने, यह मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत ही संवेदना वाला विषय है और महिलाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये हमारे लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। किसी भी तरीके से इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उसमें कोई भी रिलीजन, आप सुनिए ना प्लीज़, कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है। जितने भी अभी तक पॉइंट आए उन सब पॉइंट्स पे तुरंत कार्रवाई की गई है। एक जितनी हमारी जानकारी के हिसाब से आते ही उस पर कार्रवाई की। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहूँगा माननीय सभापति जी। हम जब भी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप हमारे साथी लगाते हैं विपक्ष के कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं उसके ऊपर आहत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सोसाइटी में एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा, एक कंसेंसस लाना ही पड़ेगा कि जो हमारे भविष्य के नौजवानों के, हमारी महिला, हमारी बहनों, हमारी माँओं, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए जो करना है, अकाउंटेबल सोशल मीडिया को करना ही पड़ेगा। उसको अगर सेफ रखना है तो उसको उन नियमों को और ताकत देनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमें अगर हमारे ऊपर अगर आप ये आरोप लगाएंगे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को तोड़ रहे हो, वो रोक रहे हो, तो वो गलत आरोप है। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें सब मिलके हमें एक नई दिशा में जाना होगा। धन्यवाद। माननीय अब्दुल वहाब जी। माननीय अब्दुल वहाब जी, प्लीज 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 प्लीज, इट्स अ क्वेश्चन मैडम, यू हैव नॉट गिवन योर नेम। प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो, देयर इज अ प्रोसीजर, प्लीज। में मुद्दा उठाया था, मंथ ऑफ जुलाई में उठाया था। इट हैज नथिंग टू डू विद फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, इट इज अबाउट सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस। आई हैड स्पेसिफिकली मेंशन दीज टू इश्यूज, पर कहीं भी इस लेटर में, और मैं ये लेटर लेकर आई हूँ अश्विनी वैष्णव जी का, आई रिस्पेक्ट हिम ट्रेमेंडसली, बट द क्वेश्चन इज ही इज नॉट इवन मेंशन्ड इट वंस। थैंक यू। एंड देयर वाज नो। माननीय अब्दुल वहाब जी, आपका सवाल। Such as Netflix, Amazon and Hotstar, whether the government is proposing any bill to oversight mechanism over the digital and OTT platform in the wake of its rapid prevalence. सर, OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स जो 2021 के हैं उसमें ऑलरेडी उसके प्रावधान है। और जो पॉइंट प्रियंका जी कह रही थी, माननीय प्रियंका जी कह रही थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने बहुत वाजिब पॉइंट उठाए थे। हमारे मंत्रालय ने तुरंत हर एक पॉइंट पे एक्शन लिया है सर। ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आपने भी एक्नॉलेज किया इस बात को। हर एक पॉइंट पे तुरंत ही एक्शन लिया गया है और एक्शन भी केवल सरफेस पे नहीं सर, उसके डीप में जाके, हर एक पॉइंट पे डीप में जाके सर्टिन का, जैसा भी माननीय सांसद श्री मोदी जी कह रहे थे, डीप में जाके सर्टिन का इस्तेमाल करके उसका जहां तक उसका सोर्स है, रूट कॉज है, वहां तक जाके एक्शन लिया गया है। धन्यवाद। माननीय आनंद शर्मा जी, प्लीज प्लीज। कहा ना सर, आपका रूल्स में है। The Minister has explained in detail the steps taken by the government to prevent the abuse of social media. However, the challenges remain, and that is how the technology can be termed as a double-edged weapon. There are positive uses and very dangerous abuses also, some of which have been referred to. You have in part C of your reply mentioned about the implementation of the rules and the appointment of the Chief Compliance Officer, Grievance Officer and nodal persons of contacts. However, is there a verification process to check
how effectively they are functioning. Two, the WhatsApp groups are created, and WhatsApp groups spread insidious messages. They inflame passions, they create riotous situations, and I'm sure that the government is aware of that. I have personally, on occasions, written. I've tried to contact these compliance officers. I've spoken to the secretary in your ministry personally, not through my office, but they have failed to check. I'm not blaming you, because these portals, they refuse to give you the details of the portals. So in such situation, will you have a centralized control room which can take effective action and also to block the misuse of such apps if required? Because we have referred about the freedom of expression, freedom of speech. Article 19 is very clear. It's not unrestricted. There are exceptions for the commercial media, and there are Question, Mani Anandji, going back. question. I've asked the question. Yes, please. Thank you. Honorable Chairman, sir, if the House has consensus, we are willing to provide even more stricter social media rules. Definitely, and I personally believe that for the protection of our citizens, we must make the rules stricter. At this point of time, we are working within the constitutional framework. So your point, the role of state and the role of center, both have to be seen in the perspective. The law enforcement agencies of the state governments, they are taking the action based on the information which goes either from certain or from MIT or any other agency. There is a framework created for any cyber crime which happens all over the country. It can be reported over a central portal, and it goes to the relevant law enforcement agency. But I agree with you that we have to come forward as a society and create much more accountability for the social media. Thank you. Question number 34, Dr. Sasmit Patra. प्रश्न संख्या 34 उत्तर सभा पटल पर रख दिया। First supplementary. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को पूर्ण तरह से कार्यरत करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार इस पर जोर दिया है और केंद्र सरकार को भी जताया है, और इसी संदर्भ में उनके ही इसी सोच से, इसी आवेग से ये प्रश्न आती है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2004 में कंस्टिट्यूट होती है वो कमेटी, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन रिकमेंडेशंस में से कौन से रिकमेंडेशंस को ग्रहण किए गए और कौन से रिकमेंडेशंस को काट दिए गए, और वो कारण क्या है जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशंस को काट दिए गए? धन्यवाद। सभापति महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में से कितने रिकमेंडेशन को स्वीकार किया, कितना काट दिया गया। ये आयोग का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ, और उसके बाद में इस स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 2007 में अंतर मंत्रालय की एक कमेटी गठित की गई जिसमें 11 मंत्रालय थे। उन्होंने मिलकर जो 215 रिकमेंडेशन थी उनमें से 201 को स्वीकार किया, और उसमें से भारत सरकार ने, अभी वर्तमान की सरकार ने 200 रिकमेंडेशन के ऊपर काम प्रारंभ कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया। वहीं रही बात ऐसी, जो 215 में से जो 14 रिकमेंडेशन जो थी जो अस्वीकार की गई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय ऐसा निर्णय उस कमेटी ने क्यों लिया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही एमएसपी है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने उस समय एमएसपी के ऊपर कहा था कि एमएसपी किसान की लागत से कम 50% से अधिक किसान को मिले। लेकिन उस समय की कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने विकृति उत्पन्न होने का कारण देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि एमएसपी का 1.5 गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकमेंडेशन को माना जो उस समय उसकी कमेटी ने अस्वीकार किया। अब एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है, और वो भी 1.5 गुने के ऊपर खरीद हो रही है। अब दूसरा मुझे इसमें एक और है कि उस समय मंत्रालय का नाम भी स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि कल्याण मंत्रालय होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समय इसको भी अस्वीकार इसलिए किया कि कल्याण करने का काम अन्य मंत्रालयों का है, कृषि मंत्रालय का नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने उसका नाम भी कृषि कल्याण मंत्रालय रखा गया। और उसके बाद में
जहाँ तक खाद्य गारंटी की बात है, तो वो भी उस समय खाद्य सुरक्षा की खाद्य गारंटी अधिनियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन अस्वीकार किया गया। हमारे खाद्य सुरक्षा के तहत आज भी उनके सभी व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। उस समय ये भी हुआ कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात थी, तो उस समय भी इस ऑर्गेनिक खेती या जीरो बजट इसको या उस खेती को भी बढ़ाने के लिए उसमें उस समय अमान्य किया गया था। लेकिन हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने स्कीम भी लागू की और किसानों को उसको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि हमें जीरो बजट या प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। वहीं जो दूसरा एक ये है कि इसके अंदर ये भी हुआ कि पीडीएस को यूनिफाई करने की बात कही थी, उन्होंने उसको भी अस्वीकार किया। वहीं महिला समूहों को उस समय स्वामीनाथन जी ने कहा था कि महिला समूहों को और महिलाओं को, किसानों को किस तरह से हम आगे बढ़ें, पर उस दिशा के अंदर भी उन्होंने उस समय महिला के विषय पर भी अमान्य इसको अस्वीकार किया। लेकिन अभी हमारी सरकार के द्वारा एफपीओ बनाए जा रहे हैं जो स्पेशल महिलाओं के लिए बन रहे हैं, या महिला किसान उनको, और उसके साथ ही महिला किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ऐसे कई और भी हैं जो टोटल मिलाकर, जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात है तो इसमें माननीय मंत्री जी की गई। कृपया ब्रीफली आंसर दें। किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का भी प्रावधान किया गया। ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ, माननीय मंत्री जी उस समय ब्रीफली आंसर दें प्लीज। सेकंड सप्लीमेंट्री। महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक एक्शन पॉइंट अभी भी छूटा हुआ है, वो है मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में होना चाहिए आरकेवीवाई के माध्यम से। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक ये जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस का एक अंग है कि मॉडल जीनोम क्लब हर राज्य में हो आरकेवीवाई के माध्यम से, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ है और कब तक होने की आशा है? धन्यवाद। जैसा कि आईसीआर के अंदर वैसे तो जीनोम बैंक बना हुआ है पूरे देश का, आज विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरे नंबर का जीनोम है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन थी उसके अंदर ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एक जीनोम बैंक बने जहाँ पर वैरायटी वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके। इसके लिए भी हमने भारत सरकार ने यहाँ पर आरकेवीवाई योजना के अंदर प्रावधान कर दिया है। जो भी राज्य अगर इसके अंदर इस फंड का इस उपयोग लेना चाहे आरकेवीवाई योजना के तहत, तो वो वहाँ पर जीनोम बैंक की स्थापना कर सकता है। ये अभी इसको स्वीकार, इसके अंदर कोई राज्य अगर करता है तो उसके लिए इसमें फंड में प्रावधान भी है। धन्यवाद। माननीय रिपुन बोरा जी। हाँ, माइक काम वहां आ जाए। आप शायद गलत जगह रहे होंगे इसलिए माइक काम नहीं कर रहा। Thank you, sir. Sir, last few days I have been trying to get one supplementary, but I am fortunate enough. This time my turn has come. Just to clarify, So, people come. Just to clarify, my- if there are other members following your party, I have to see all of them. Anyway, sir, Please. no issue. Please. So just my question is to the Honorable Minister. The India reply, the Minister has said that the Swaminathan Committee has recommended all total 201 recommendations, and out of that, government has already taken action on 200. But in the reply, it is written here, but in the reply, Minister has said that all total 215 recommendations have been made, and out of that, 14 is yet to be implemented. So why this difference? Why this difference is there? So I want to know from the Minister. Thank you, Ripun ji. जी महोदय जी, ये जो रिकमेंडेशन थी वो स्वामीनाथन आयोग में स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें तो 214 रिकमेंडेशन पेश की थी, लेकिन जो अंतर मंत्रालय की कमेटी थी 2007 में, उसने निर्णय लिया कि इसका ऊपर हमें कुछ और कम करने चाहिए। तो कम करने के लिए उन्होंने कौन सी अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है रिकमेंडेशन को, तो उसमें उन्होंने जो कम की वो मैंने अभी आपको बताई है मेरे पहले, और उसी को लेकर आज भारत सरकार ने उसके बाद में भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उस कमेटी ने अस्वीकार किया उसके बावजूद भी इसको स्वीकार करते हुए उसके ऊपर कई ऐसे बिंदु जिन पे काम किया गया, जिसमें मैंने एमएसपी का आपको उदाहरण दिया। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी।
You have asked question. So yes, Please. Sir, in respect of the minimum support price is concerned, Andhra Pradesh is an agrarian state, and most of the farmers are depending on paddy culture. And due to the present scenario, after 2019, there are so many suicides committed by the farmers due to lack of minimum support price and also storage capacity in the state of AP. And suicides are increased. Now, our Honorable CM advised not to raise paddy crop. If that is so, what steps you have taken to prevent the suicides? Whether there is any proposal to increase the minimum support price for the welfare of the farmers? Thank you. माननीय सभापति जी, सदस्य की चिंता निश्चित रूप से किसानों के प्रति है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के किसान किसी भी जिन्स को पैदा करता है, उस जिन्स का वाजिब दाम उसे मिलना ही चाहिए। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी है, सरकार की खरीद की व्यवस्था भी है। गेहूं और धान पहले से अधिक मात्रा में खरीदा जा रहा है, अब दलहन और तिलहन इनको भी खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मोटे अनाज को भी कोई राज्य अगर पीडीएस में शामिल करके अपने उपभोक्ताओं को बांटना चाहता है और वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हम पीडीएस में हम इसे बांटेंगे तो मोटा अनाज खरीद लिया जाए, तो केंद्र सरकार उसको भी अनुमति प्रदान करती है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, पहले भी यह बताया जा चुका है कि कुल मिला के लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय सरकार ने 18-19 में लिया। उसका लाभ पूरे देश के किसानों को 22 जिन्सों पर मिल रहा है और लगातार सरकार की ये कोशिश है कि कुल मिला के एमएसपी पर दाम मिलना एक पक्ष है, लेकिन किसान को फ़ायदे में लाना उसकी चौतरफा मदद करनी चाहिए। इसलिए पीएम किसान योजना, एफपीओ, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब इसीलिए प्रावधान किए गए हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान की ज़रूरत है वो गांव में उसको नज़दीक मिले, जिससे फसल के उपरांत जो उसका नुकसान होता है वो उस नुकसान से बच सके और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सके। इसलिए चौतरफा प्रयत्न किए जा रहे हैं किसान की समृद्धि के लिए। धन्यवाद। माननीय प्रसन्नाचार्य जी। As the recommendation of the Swaminathan Commission is concerned, there are two views. Government says that it is implementing the Swaminathan Commission so far the MSP recommendations are concerned, but the farmers of the country do not agree to this. And one of the demand of the agitating farmers were to give a legal protection to MSP. I would like from the Honorable Minister, the Cabinet Minister himself, whether the government is considering to bring a bill in this House to give a legal protection to MSP so that any violation of MSP will be subject to legal action. Thank you. सभापति महोदय, आचार्य जी ने एमएसपी की बात की है। मैं आपके माध्यम से देश भर को बताना चाहता हूं कि 18-19 से पहले कोई ऐसा बड़ा मैकेनिज्म नहीं था जिसको एमएसपी को समय समय पर परिमार्जित किया जाए या किसान के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की, उन रिकमेंडेशन में भी 14 रिकमेंडेशन ऐसी थी जिसको अंतर मंत्रालयीन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया। उसमें एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी जिसे नहीं माना गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बाद में आने के बाद 18-19 में स्वीकार किया और निश्चित रूप से एमएसपी अब बढ़कर मिल रही है। और एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। ये निर्णय अनेक वर्षों से चल रहा है और पिछले 7 वर्षों में एमएसपी पर जिन्सों की खरीद भी बढ़ाई गई है और एमएसपी को पहले से दोगुने दाम दिए गए हैं। और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भी 2,37,000 करोड़ रुपया किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए दिया जाए, ये भी प्रावधान किया गया है। जहाँ तक गारंटी कानून का सवाल है, तो मैं सदस्य को और देश को और किसान संघों को ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने इन सब विषयों पर
विचार करने के लिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है, जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 35 माननीय श्री नीरज डांगी जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर, क्या यह सही है कि एनएमआई के आंकड़ों के अनुसार सिरेमिक ग्रेड चाइना क्ले का देश के कुल भंडार का 19% भंडार राजस्थान में है? यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सिरेमिक उद्योग स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मूल प्रश्न के साथ इसका संबंध नहीं है, लेकिन बिल्कुल है। ये बताइए जरा कैसे है, हम भी देख लें। प्रश्न के साथ, मूल प्रश्न के साथ सिरेमिक का तो विषय भी नहीं है आपके प्रश्न में, लेकिन ये सभी को ये जानकारी है कि सिरेमिक गुजरात, राजस्थान वगैरह में काफी अच्छी मात्रा में। सर, उद्योग राजस्थान में स्थापना करने की बात है, उसी से कनेक्टेड है प्रश्न। हाँ, तो उद्योग के ऊपर मैं आ रहा हूँ, पर मैंने कहा सिरेमिक का जिक्र नहीं है। राजस्थान और गुजरात दोनों में सिरेमिक के अच्छे डिपॉजिट्स होने के कारण कई इंडस्ट्रीज दोनों राज्यों में आई हैं। लेकिन जैसा मैंने जवाब में बताया, केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं से अलग अलग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम्स, योजनाएं समय समय पे लेके आती है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगना, किसने लगाना, लोकल लेवल पे क्या उसको प्रोत्साहन देने के लिए करना, ये राज्य सरकार का विषय है। और राजस्थान राज्य सरकार इसमें पहल करे तो मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य होगा। हर प्रदेश ने अपने अपने एरिया में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ के, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मूलतः इंडस्ट्री का बड़ा प्रभाव है उसको प्रोत्साहन दिया है। जैसे गुजरात में मोरबी में बहुत बड़े पैमाने पे सिरेमिक इंडस्ट्री ग्रो करी है। वो कोई केंद्र सरकार उसके लिए योजना नहीं बनाती है, राज्य सरकार प्रोत्साहन देती है, राज्य सरकार उद्यमियों को एनकरेज करती है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय सांसद ने राज्य सरकार से बात करके किस प्रकार से वो भी, क्योंकि सिरेमिक की डिमांड बहुत है, विश्व भर में डिमांड है। भारत के सिरेमिक प्रोडक्ट्स आज हजारों करोड़ के देश के बाहर एक्सपोर्ट भी, निर्यात भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर राजस्थान इस पे चिंता करे तो बहुत स्वागत योग्य होगा और संभावनाएं भी अच्छी हैं राजस्थान। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, पुनः वही क्ले पे है। क्या यह सही है कि देश में काओलिन, जो चाइना क्ले है, का प्रसंस्करण ज्यादातर पारंपरिक तरीकों जैसे लेविगेशन और धुलाई द्वारा किया जाता है? यदि ऐसा है तो भारत सरकार भविष्य में प्रोसेस्ड काओलिन की मांग को पूरा करने के लिए हाईटेक प्रोसेसिंग स्थापित करने के क्या प्रयास कर रही है? ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार एक प्रकार से योजनाएं अलग अलग जनरल स्कीम्स बनाती है, जिसके आधार पे लोग अपनी इंडस्ट्री किधर लगाना, क्या लगाना तय करें। उदाहरण के लिए राजस्थान में आपने सिरेमिक की बात कही, तो जयपुर में ब्लू पॉटरी काफी बड़े पैमाने पे चलती है। इसी के हिसाब से नागौर में मकराना मार्बल का अच्छा प्रभाव है। तो अलग अलग क्षेत्र में लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो, उसके लिए केंद्र पूरे देश भर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या प्रोत्साहन देना जिससे वो इंडस्ट्री वहां पे और बढ़े, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है, काम भी है। केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए हम रॉडटेप स्कीम या ROSCTL के माध्यम से जो जो स्टेट के टैक्सेस बर्डन होते हैं या उस प्रोडक्ट पे लगते हैं उसको वापस देने का काम केंद्र सरकार करती है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन हो। कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 14 क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया, जिसकी जानकारी सभी के समक्ष है, मैंने उत्तर में भी दी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 74,000 करोड़ की स्कीम, शायद पहली बार देश में
इतनी बड़ी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की आई है जिसमें भी सेरामिक का इस्तेमाल होने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ अब केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं सामने हैं, उसमें अब प्रदेश आपस में कितना जल्दी उस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्कीम्स लाते हैं, उससे तय होगा कि इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होगी। उदाहरण के लिए एक टेक्सटाइल का बताना चाहूँगा माननीय सदन को आपके माध्यम से कि हमने टेक्सटाइल में पीएम मित्र इस नाम की एक स्कीम लाए हैं जिसमें 7 टेक्सटाइल के बड़े पार्क्स 1000 एकड़ के बनाने जा रहे हैं। अब उसमें हमने राज्यों के बीच में एक स्पर्धा बनाई है कि राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, कौन से राज्य टेक्सटाइल क्षेत्र को ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन देने के लिए आगे आते हैं, ज़मीन सस्ते में या बिना शुल्क के उपलब्ध कराते हैं, कौन से राज्य बिजली कम कीमत पे लंबे अरसे तक देते हैं। तो अलग अलग तरीके से राज्यों के बीच में स्पर्धा हो और उस स्पर्धा में से हम तय करें कि कहाँ पे ये टेक्सटाइल प्रमोशन पार्क है। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, Chairman, sir. हाँ, I wish to ask Lok Sabha, sir. हाँ, from Lok Sabha. So I would like to ask the Honorable Minister that despite a long-standing demand to lessen trade deficit, there has been a decline in budget on export promotion schemes. How does the government plan to solve this problem with particular reference to Rajasthan industry? I think that's a very good question, but I have been on record on more than one occasion to say that no country in the world can survive beyond a point of time only on clutches when it comes to export promotion. India, over a period of time, has been promoting exports through subsidies, but that has not really given us the desired result or given us the huge impetus that one would have expected. In fact, the reality is that every nation has certain products, certain services, which are our strength area. Every theory in the world says that one should focus only on industries where you have competitive or comparative strengths. And those should be the products on which we focus our exports. India has moved more into an interconnected world where such subsidies are actually not even permitted under the WTO. We've had instances of India also being taken before the WTO on export subsidies. And therefore, our approach is that we reimburse the taxes or cesses or duties that are loaded on the product by the states. As far as the central government is concerned, usually most products are under the GST, so it automatically gets refunded when you export the product. But should there be any other tax which is levied on any export product or which is not moderatable or reversible in the form of refund, we are giving back to the exporters in the form of a RODTEP scheme, which is the remission of duties, taxes, and levies and cesses. And we have found very good acceptance of this scheme across the country. Based on that, exports have also been growing. And while Honorable MP feels that we have reduced our export subsidies, the reality is this year India is going to see a record performance in exports. We have already, up to 31st March, crossed $334 billion of exports, which is higher than any full year ever in the past. And we are well on track to go to $400 billion export in the current year. My compliments to all the exporters, all the industry participants, including from the state of Rajasthan, who have contributed in a big way. I would urge all the states to support economic activity through exports, because truly export promotion is the way by which we'll be able to get more and more jobs in the system, more and more economic activity. I think it is the collective effort of the center and the states, and we are finding very good traction across the country working together on Thank this. you. Question number 36, Mani Kailas Soni ji. प्रश्न नंबर 36 टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, पहला सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी, देश के बहुत सारे रेल मार्ग ऐसे हैं जो लाभप्रद नहीं हैं, जो बनाए गए हैं
यहाँ बुंदेलखंड एवं अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा क्षेत्र गोंडवाना, लगभग 5000 ग्राम जो है रेल कनेक्टिविटी से वंचित है, तब ये मार्ग क्यों नहीं बनाया जा सकता? थैंक यू। माननीय सांसद महोदय का जो सेंटिमेंट है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी आपके माध्यम से सभी के सामने जानकारी रखना चाहूँगा। रेलवे के लिए मध्य प्रदेश में 2009 से 14 में मात्र 632 करोड़ पर एनम एलोकेशन होता था। बढ़ा के 2014 से 19 4213 करोड़ किया गया, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। और 22-23 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए 12,110 करोड़। आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपकी इमोशन है वो मैं उसको संवेदनशीलता के साथ लेता हूं और माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ बैठे और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अगर कोई संभावना निकलती है अनवायबल प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की, तो संभावना पे मिलकर हम विचार करेंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय सोनी जी। एचबी कामत ने इसको बुंदेलखंड का दरवाजा कहा, करेली। सवाल। और साउथ की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि आपकी लागत 4-5 वर्षों में वसूल हो जाएगी। सवाल पूछें। ये ऑलरेडी एनएचएआई से लगा हुआ हिस्सा है और ये लोकोपयोगी है। इससे साउथ की दूरी बहुत कम हो जाएगी। अभी करेली से ये पॉइंट्स माननीय मंत्री जी से इसकी वायबिलिटी पर जब आप बात करें तो चर्चा करें। सवाल पूछिए। आपके जवाब के हिसाब से करेली से अभी इटारसी से जुड़ा है, जहां 12 घंटे का समय लगता है, सीधे 3 घंटे का समय लगेगा। इसलिए ये अत्यंत लोकोपयोगी है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? धन्यवाद माननीय सोनी जी, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सजेशंस थे उनके। माननीय जवाहर सरकार जी। लेकिन क्वेश्चन का हो तो नहीं पूछेगी। हाँ, इस माइक इज वर्किंग। Thank you, sir. Since the question is on railway lines within Madhya Pradesh, may I ask the Honorable Minister to inform the House how many railway station halts have been put on hold in the name of COVID? You see, COVID has gone through, we have gone through a lot of difficulties in the name of COVID, but one of the things that the railways is trying to do is to bring in economy by stopping smaller stations. You have put your question. That cannot be a permanent, that's a social obligation. You have put your question, Jawahar. Sir. Thank you. And that would apply to the rest of India. Please. Asked a question which is not related with the main question. Yes. I can send the data as and when we can meet and discuss it, sir. Thank you. माननीय अजय प्रताप सिंह, क्वेश्चन मध्य प्रदेश से है, इसलिए आपके सवाल इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड होने चाहिए। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है। इसका रेल खंड जो सीधी से सिंगरौली, इसका पहले अलाइनमेंट सीधी से बरगवा तय किया गया था, बाद में इसको परिवर्तित करके सीधी से गोंदवाली कर दिया गया। इस अलाइनमेंट परिवर्तन के कारण क्या है और क्या इससे लागत बढ़ी है अथवा घटी है? धन्यवाद। अगर बढ़ी है तो इसके लिए धन्यवाद, जिम्मेवार कौन? धन्यवाद। सभापति जी, अवश्य ये प्रश्न मध्य प्रदेश का है, ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है, मूल प्रश्न से लगा हुआ नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट ललितपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यू लाइन है देश की, 541 किलोमीटर की। इसका अलाइनमेंट जैसे जैसे ज़रूरतों के हिसाब से और विशेषकर इंडस्ट्री और पैसेंजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके अलाइनमेंट बीच में चेंज किया गया, उसके कारण कॉस्ट भी बढ़ी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अभी बहुत अच्छी है और इस वर्ष जो रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए, उस रिकॉर्ड एलोकेशन के कारण इस प्रोजेक्ट में और भी प्रोग्रेस तेजी से होगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती तो माननीय सांसद महोदय मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, उसको हम समाधान करेंगे। धन्यवाद। माननीय राम विचार नेताम जी।
मेरा माननीय मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश से ही कट करके हम छत्तीसगढ़ गए। वो इसमें पर सवाल मध्य प्रदेश का है। अधिकार बनता ही है महोदय, छत्तीसगढ़ के किन किन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया? क्या उन मार्गों में चिरमिरी बरवाडीह का लाइन भी सर्वेक्षित है? उसकी स्वीकृति की क्या स्थिति है? धन्यवाद, आप दे सकते हैं सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। मेरे तो ओपन डोर्स है। माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। सर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री केजे अल्फोंस। Sir, thank you for this opportunity, even though I have start question listed today, but I know it would never come up. Day for Please yesterday, so put same, your question. it had the same fate, sir. Thank you so much. Sir, I live in the heart of Delhi, and I had one of these national carriers, that was my telephone. I couldn't get a call, so I had to come out to the garden to make a call. Sir, today, past 1 week, I've been trying to make calls. I have possibly the biggest telephone operators in the country, and I use their phone. I can't get a telephone call through at all. Sir, in Cochin, where I go and live in the government guest house, it's right in the heart of the city. I can't get a call through. Sir, is it a problem with the spectrum, or is it a problem with these service providers? Sir, Honorable Minister, would you kindly take steps to rectify this, please? Thank you. प्रश्न सर ट्राई से संबंधित है। ट्राई में ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए एक स्पेशल सेल है। मैं मान्यवर सांसद महोदय से निवेदन करूंगा उस सेल में अपनी कंप्लेंट रखे और ट्राई उसके ऊपर विचार करेगी। डॉक्टर वी शिवदासन। Whether government has any share in Vodafone, then government sector one company is here. If yes, then please explain the details. सर, टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है सर पिछले कई वर्षों से, और उसके पीछे कारण क्या है वो हमारे मित्र अच्छे से समझते हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। इन परिस्थितियों के कारण गुजरने के कारण आज डिस्पाइट हेवी ग्रोथ इन द टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट, बहुत सारी कंपनियों की आर्थिक हालत में एक समस्या आई। अब सरकार का रेवेन्यू कहीं पे कॉम्प्रोमाइज न हो, सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज न हो, फिर भी एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो सके, ये सब विचार करके बहुत ही सोच समझ के इतना, मेरे ख्याल से जो सितंबर के रिफॉर्म्स की बात जो आप कर रहे हैं, that's one of those very well thought out, really going deep into the problem and bringing up a solution where government's revenue is not compromised at all. With that philosophy, those reforms were taken out. In that, one of the options which was given to the industry was that the interest which you have to pay for the 4 years, that interest can be paid either in you pay it or you give your shares in lieu of that. So that's the thought process with which that option was given. 3 companies have exercised that option, sir. We are examining the letters that they have given. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Sir, I am well aware of the various initiatives taken by the government to spread telecom revolution in remote and rural areas of India. Sir, the BharatNet project would be a good example, which is implemented to provide broadband connectivity to all the panchayats. But sir, even today, a quarter of the Gram Panchayats in the KBK districts of Odisha, which is largely tribal dominated and Naxal infested, are unconnected. They do not have telecom connectivity despite repeated reminders and address in this house. So my request and question to Honorable Minister is, will he come out with a special scheme to expedite telecom connectivity in the KBK districts of Odisha? Thank you. 7,000 new telecom sites in the country, especially in areas which are not connected. And I'm so glad that Odisha, because of various historical reasons and because of some of the areas which are very difficult, especially the forested areas, KBK areas, which Honorable Member has referred to, 3,933 sites were sanctioned for Odisha. It's a great thing. I request Honorable Member that please approach the state government so that the sites can be easily given, can be quickly given. We can start raising the tower. And BharatNet, sir,
In Odisha, the BharatNet project is implemented by the state government. I'll request the honorable member once again, please work through the state government so that the implementation can improve. Implementation is not at all satisfactory. Thank you. Question number 38, माननीय कनक मेला रविंद्र कुमार जी. Number 38. माननीय मंत्री जी. Railway, it's related to railway. So the answer is 38, sir. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, as per item 18 of the schedule 13. Sorry, question hour is over. One more, sir. Question hour is over. Supplementary. Please, no. Sorry. Whether there is any time Statements of the Public Accounts Committee, Sri Bhuneshwar Kalita ji, please lay. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. The reports of the Public Accounts Committee 2021-22, serial number 1 to 19. Thank you, sir. Thank you. Manya Prasannacharya ji, discussion on the motion of thanks on President's address. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the occasion to speak out my mind about the address of the Honorable President of India to the joint session of both the House in the beginning of this budget session. Sir, it is customary that the Honorable President of India will address both the Houses at the beginning of the session. And it is also very clear that whatever the President speaks on this occasion, it is only a speech prepared by the government and approved by the cabinet of this country, sir. But, sir, I must thank the President because at the beginning of his speech, one very important thing the Honorable President has said, and he has said that I salute all the great personalities for their contribution in the development journey of our country in these 75 years of independence. I put emphasis on this very sentence of the Honorable President because there are some people in this country who refuse to recognize the contribution of all those great leaders who laid the foundation of a new India after independence, including the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. There are a whole of leaders in this country who not only fought for our independence, but after independence, they took over and laid the foundation to build up a new India, a prosperous India, a progressive India, a secular India, a India belonging to all sections of the people, all sections of the citizens. Therefore, sir, I think the President has very rightly, at the outset of his speech, has saluted all those great personalities for their contribution in the last 75 years of our independence. Sir, for one thing, I appreciate the attitude of this government, Modi's government, that in some respect, they are taking a very nationalistic approach. And sir, it is a very, very good decision that Netaji Subhash Chandra Bose, we all know about his contribution to the freedom struggle of this country. And many people think that had Netaji been alive and had Netaji been in the helm of the affairs of the country after independence, the shape of our independent India would have taken a different direction. But unfortunately, that couldn't happen. And unfortunately, sir, there are some people in this country, I don't want to indicate who are those people, in order to eulogize some other leader, I think the contribution of Netaji and some other leaders of Netaji were very conveniently forgotten. People refuse to recognize their contribution to this country. So this government has very rightly taken a decision. I therefore compliment the Honorable Prime Minister that the Republic Day celebration
will start from the birthday of Netaji, that is 23rd of January every month. It is a very, very welcome decision this government has taken. Sir, another very important decision and very impressive decision this government has taken to observe Bir Bal Divas on 26th December in the memory of sacrifice of Sahib Dazad, the son of the 10th Guru Govind Singh, for their unparalleled sacrifice during the Muslim era. Sure, there are some other Bal Birs in this country which sacrifice is memorable, that cannot be forgotten. I will cite one example from my own state, Odisha. There was a boy, his name was Baji Raut. He was an 11, 12-year-old boy. And he bravely faced the bullet of the Britishers that time. He refused, he was a boatman. His father was a boatman. His father was ailing. Therefore, he took charge of the boat. And when the British soldiers came to the river bank and asked the boy to open the boat to take them to the other side so that they can go and invade a village and arrest some freedom fighters, this 12-year-old brave boy, Baji Raut, refused. And he was shot at. And he became a Shaheed. So there are some other such Bal Birs in the country. My point is, all the sacrifice history of such Bir Bals of this country should be collected, and memorials should be constructed in their memory, and history should be give proper place to the sacrifice of such people. Therefore, it is a very good step that the government has started observing the Bir Bal Divas. I therefore also compliment this government, sir. Sir, the Honorable President, if you go to para 22 of the speech of the Honorable President, he has said about the farmers, empowering the farmers of this country. A very, very welcome thing, sir. The President has mentioned about empowering the farmers and rural economy of the country. I'm not going to delve in detail about the rural economy, sir, because I know you will not give me time. I have very limited time. And other members have very elaborately yesterday and day before have explained what is the rural economy in this country now. And the President has also very complimented the farmers, sir. Despite pandemic, farmers produced more than 30 crore tons of food grains, and 33 crore tons of horticulture produced in 2020-29, despite the pandemic situation, sir. And agriculture export reached a record level and registered a growth of more than 25%, valuing rupees 3 lakh crore. This is the contribution of the farmers of this country. In the question hour, we were discussing about Swaminathan Commission, minimum support price pertaining to the farmers, sir. Sir, if the farmers can contribute so much to this country, in return, what is getting? What the farmers is getting? Farmers' income have not been doubled. This is the promise of this government that by 2022, farmers' income will double. I will ask personally to the government, can the government say that by now it has been able to double the income of the farmers? Can they say it? No, sir. The farmers of the income has not yet been doubled. Sir, had the farmers' income been doubled, you'll be astonished to know that why the farmers of the country are still committing suicide every day. Sir, it is not my report. It is the report of the National Crime Record Bureau. It is NCRB data. And according to the NCRB data, as many as 42,480 farmers and daily wagers committed suicide in 2019. It is 2019 report, not the latest report, which is an increase of 6% from the previous year. So every year the number of farmers' suicide is going on. Why? If they are getting the MSP, now in the question hour I put the question, and other honorable members also put the question about MSP. I think government gave a very evasive reply. Government is not coming out with a reply whether they will bring a law in this house to ensure MSP legal coverage to MSP. Government refused to do that, and that is one of the demand of the agitating farmers of this country, sir. And most of the farmers in this country, they are small and marginal farmers, and they are committing suicide. The farm laborers are committing suicide. If the economic standard of the farmers, the government has been able to increase
then why the farmers is compelled to go for committing suicide? Has the government an answer for this, sir? So this is a very pertinent question, sir. The plight of the farmers, I don't think, had the farmers been in a happy condition, in a very sound economic condition, thousands and lakhs of farmers would not have been gone for agitation in the border of this country. Sir, just now the railway minister is very much present here. I will compliment the railway minister that he has given a good amount of sanction to the different projects of Odisha, sir. I compliment him. Sir, but one thing, sir, why step-motherly attitude is being shown to Odisha, my own state? Sir, I will give only one example. Our CM has repeatedly asked for unification of all railway assets over Odisha state under East Coast Railway headquarters at Bhubaneswar. But we are told that zones are not formed on state boundary line. The reply of the government is, zones are not formed on state boundary line. Okay, sir, I agree. Zones are not formed on state boundary line. But now the South Coast Railway zone has been formed on state boundary line. And at which cost? At the cost of the East Coast Railways. Why this discrimination, sir? When our request has been turned down, then why is in some other state you are going for state level boundary and constituting the railway zone, sir? Sir, you have taken away a portion of Andhra Pradesh from East Coast Railway. Then why Raurkela and Jharsuguda, etc.? This is our old demand. Now Jharsuguda and Raurkela, it is in Chakradharpur division outside Odisha. So our request is, you bring Raurkela and Jharsuguda and other areas, constitute a separate division, merge it with the East Coast Railways. The reply is, railway zones are not constituted on state boundaries. If it is not constituted on the basis of state boundaries, then why it happened in Andhra Pradesh? So therefore, sir, we feel that in some respect, discrimination is meted out to my state, Odisha, sir. Sir, the President has mentioned about forming 2 All India Institute of Medical Sciences in Jammu, one in Jammu and one in Kashmir. I welcome it, sir. It is a very, very good decision, sir. But, sir, there are some other areas in this country where health services are very poor. I will cite one example. It is Sundargarh in Odisha, sir. It is a tribal-dominated area, and it is adjacent to Jharkhand, which is also a tribal-dominated area. So, the request of my state government, my Chief Minister Naveen Patnaik has been all the time requesting the central government to open an AIMS Institute in Sundargarh, sir. I welcome the decision of the government that 2 AIMS are being opened, one in Jammu and one in Kashmir. But some other areas in the country are there, mostly dominated by the tribal population, where health services are poor. So therefore, our request is to open a AIMS at Sundargarh as well. Sir, there are some states in the country, Odisha, Bihar, Jharkhand, they are mining state, mine-producing state, mine-bearing states, sir. And Government of India is collecting a clean environment cess. Earlier per ton, they were collecting 200 rupees. Now it has been enhanced and they are collecting 400 rupees per ton collected by the center. Sir, Odisha government have requested for renaming the cess as Environment and Rehabilitation cess. Sir, we are suffering. The mine-bearing states are suffering. Our environment is polluted. Our trees are cut. And Government of India is collecting the cess in the name of clean environment cess. And we, this mine-bearing state, we do not get a single pie on that. So my Chief Minister Naveen Patnaik has always been requesting that rename it as cess, Environment and Rehabilitation cess, and earmark at least 60% of coal for the coal-bearing states. This has been our request. Government of India is not considering. Sir, cess and surcharge. Sir, the share of this gross tax revenue for the Union government increased from 7.5% to about 19% in the last 20 years. Cess and surcharge. Government of India is imposing cess and surcharge on petroleum, on petrol, on diesel, on liquor product, and some other products also.
And the increased stand of center to rely on cess and surcharge denies the states their rightful share in tax devolution. Because the cess and surcharge amount, it is not going to the divisible pool. And the states are not entitled to get a share of it as per the recommendation of the Finance Commission, sir. So our request to the central is that the revenue thus generated should form of the divisible pool so that the concerned states can get a benefit of that thing. Sir, during the pandemic, okay, the central government spent a lot of money. The state government as well spent a lot of money for that, sir. But from that fund will come. So this is our genuine and rightful demand. So I urge upon the central government to consider. Sir, the Honorable President in his speech has mentioned about women empowerment. And the President says, women empowerment is one of the top priority of the government. Sir, it is just contrary of the fact, sir. Sir, okay, Beti Badhao, Beti Bachao, Beti Padhao, lot of slogans are being there, sir. Sir, I will say only one thing, sir. Okay, Triple Talaq Bill was passed by this House. And we said that among the minority communities, Muslim communities, lot of superstitions are there. We have to deal with that. And everybody supported the Triple Talaq Bill, sir. Sir, I will put one question here. What happened in Sabarimala in Kerala? What was the judgment of the Supreme Court? What was the stand of the Bharatiya Janata Party? There are two All India largest national political parties. One is Bharatiya Janata Party, one is Congress Party. What was their stand on that? On the one hand, we say about women emancipation. And on the other hand, we support preventing the women from entering into a table. We are not even prepared to go by the judgment of the Supreme Court. What was the Supreme Court judgment? Supreme Court held about Sabarimala that any exception placed on women because of biological differences violates the Constitution. It violates the right to equality under Article 14 and freedom of religion under Article 25. Why this double standard? On the one hand, we say about women emancipation. On the other hand, we prevent the women from entering into a temple and pray there and offer their prayer to the Lord. So this is double standard, sir. So I think we should, about women reservation bill, sir. Sir, this House passed this women reservation bill in 2010. But still that bill has not become an act, sir. Sir, women, you'll be astonished to know, sir, women represent 10.5% of the total members of the Indian Parliament. It is the latest. What is women representation in Rajya Sabha and in Lok Sabha, sir? And in the legislative assemblies across all the state, it is a pitiable 9% only. If you take into consideration the women representation in all the assemblies together, it is hardly 9%. And it is not my report, it is the report of Election Commission of India, sir. Sure, even in Muslim countries, those who are considered to be very conservative people, even in Muslim countries, women representation is much more than what we have here. And even Pakistan and Bangladesh, two Muslim-dominated countries, they have passed the Women Reservation Bill, Act. But we are reluctant. Why? On the one hand, we say of women emancipation. On the one hand, we say of Beti Badhao, Beti Badhao, Beti Bachao. On the one hand, we say of bringing the women to the mainstream of the society. But still we refuse to give them their political right. Why? It was done by them also. It is being done by these people also. So why not this government is bringing this bill? What prevents them? So this is, I'm sorry to say, this is just hypocrisy. So I urge upon this government, it is high time, please bring this bill of women reservation. Sir, your time is over, and I'm coming. also concluding, sir. Yes. Very shortly, I'm concluding. Give me 2-3 minutes more time, Please. sir. Sir, one important thing I want to say, that Odisha is a cyclone-prone state. Natural calamities all the time hitting Odisha. You will be surprised to know, during the last 100 years, we have been hit by natural calamity for more than 90 times.
flood, drought, cyclone, super cyclone, and that is devastating our economy. That is devastating our economy. So we have been requesting, our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has all the time requesting the central government to give a special category status to states like Odisha. If not special status, at least a special focus category status to Odisha, and treat us as part of the northeastern states and the Himalayan states, and give that economic benefit to the state like Odisha. That is not being heeded by the central government so far, sir. So, sir, last point I will say, sir, about federalism. This is a federal country. Our constitution provides for federalism, sir. But we feel this House knows it. In every bill, there is one or two provision taking away the right of the state government. What type of federalism this is, sir? And the latest decision the government has taken, that at any moment, central government can withdraw any IS officer from any state without the consent of the particular state. What type of federalism this is? What type of federalism this is? So you are not strengthening the federal character of our constitution of our country. We are weakening it. So therefore, my submission to the central government, kindly desist from doing this. This is a federal country, and federalism is our essence. You can't go away with this. So therefore, sir, if we want to take this country unitedly, if you want this country to progress, develop unitedly, if you want to take all the states to the mainstream of development of this country, don't eschew the principle of federalism. With this, sir, I, in spite of the fact that there are few contradictions in the speech of the President, करनी और कथनी में बहुत फर्क नजर में आता है. In spite of that, I support the motion of thanking the President on his address to the joint session of Parliament. Thank you, sir. Thank you, Prasanna Acharya ji. The next speaker, Shri K. Somu Prasad. I think he is in Lok Sabha chamber. I am in Lok Sabha. Lok Sabha, sir. Yes, sir, please. Thank you, sir. The Honorable President, in his speech, tried to sketch a picture of a colorful and bright present and future India. According to him, India is a fast developing nation without poverty, malnutrition, unemployment, illiteracy, etc. As per his version, the Indian citizens are living in a semi-paradise. And when the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji completed his tenure, India would become another paradise. But what is the reality, sir? It is far away from the sketches. The presidential address does not narrate the real picture of the political, economical, social realities of the country, sir. The content of the speech is nothing but the usual combination of high rhetoric, unrealistic claims of the achievements of the government, sir. Sir, let me permit to record my reservations, disappointments, regret about the presidential address. Sir, when the Honorable President spoke about the handling of pandemic, he became eloquent. But we know the central government was an utter failure in handling the situation. Sir, how could we forget the floating dead bodies in the river Ganga? How could we forget the died innocent children and patients without getting oxygen and treatment at the proper time? How could we forget the long queue of the dead bodies in the crematoriums? Sir, the Honorable President said about vaccination. Sir, population-wise, we are the second largest country in the world. Administering 150 crores vaccines to 100 crore people within 1 year is not a big deal. It could have been finished earlier. Actually, the government failed to administer 2 doses of vaccine to the entire citizen within this period. Sir, the President praised the frontline workers of the pandemic. But what the government did for them? Had the government provided any security, any protection, any insurance facilities to their life, any incentive? Nothing, sir. Sir, when we go through each and every performance of the government, especially in the pandemic period, the government did not act properly. The government was utilizing the pandemic situation
to implement its anti-people policies over them. The price hike of the petroleum products and the disinvestment of the public sector undertakings are the best examples, sir. The government is selling the share of the public sector undertakings which are running profitably and using the money to save private sector companies which are running in loss. Sir, who can support the price hike of domestic LPG and kerosene? Sir, the youth, especially the educated youth in India, are in severe frustration and mental agony because of the less job opportunities. Every day the unemployment rate is increasing. Disinvestment of the PSUs never help to create new job opportunities. Moreover, it would decrease the existing job chances. Sir, at the same time, the government is not ready to fill the existing vacancies. As per documents of the Government of India, a large number of posts in different ministries are kept vacant for the last several years. Total number of vacancies would come about 12.3 lakhs, sir. In the Defence Ministry itself, there are 2.4 lakhs civil posts are vacant, 1.28 lakhs in the Home Ministry, while it is 2.37 lakhs in the Railway. More than 7,000 vacancies are there in Health and Family Welfare Ministry. In the higher education section, it is 25,000 vacancies, sir. Sir, in the Central Police Force, the vacancies are 96,000. Sir, the disinvestment and the undeclared ban on appointment would badly affect the marginalized sections and Dalits. The Honorable President again keep mum on issues like social justice and reservation in his speech. Sir, what is the contribution of the government in NRE section? The government is dividing the workers according to their caste and religion. Separate wages for SC, ST and general categories, sir. The workers who are working together in the same field are divided as ST, SC and general category workers. It is too bad, sir. The wages for SC, ST workers is not distributed properly. 3 months' wages arrears are pending in Kerala. It should be cleared immediately, sir. Sir, there are lakhs and lakhs of contract workers and scheme workers working for several years. But the President in his speech, nothing mentioned about the regularization of the scheme workers. The Honorable President in his speech explained about the Prime Minister's Awas Yojana. He said that more than 2 crore Pakka houses had been provided to the poor. I welcome, sir. But as per the socio-economic caste census, there are 24.39 crore households in India. Out of it, 17.91 crore are living in villages. Out of the 17.91 crore rural households, 56% are landless, sir. Let us examine the status of the SC and ST. 70% of the SC and 50% of the ST are landless. Sir, without a piece of land, how could they construct a house? Land reform is the only remedy, sir. The President is keeping mum on this serious matter. Sir, disinvestment of the public sector undertaking badly affects the job chances of the weaker sections, especially SC, ST in the society. Reservation in employment is introduced only in government jobs and public sector undertaking. When a public sector undertaking becomes a private one, there ends the reservation in employment. Sir, in order to compensate the job loss due to the privatization, the demand for job reservation in private sector should be considered very seriously, sir. Sir, moreover, there are several government departments, including defense and judiciary, where the reservation is not implemented. Sir, without diluting the educational qualification or physical fitness, the reservation can be implemented even in defense department. Sir, in judiciary, also reservation can be implemented without diluting educational qualification and bar experiences, sir. Sir, as you know, in Kerala, we have a very good health care system up to the bottom level. There is a long-standing demand for Kerala. The demand of Kerala for AIMS, it is still pending without consideration, sir. Sir, as per our constitution, India is a union of states and the constitution gives much importance to the federalism. The constitution upholds the federal character, but the central government always imposes unilateral decisions on the state governments and curbs the state power. Sir, the governors appointed by the center most of the time are acting as political alliance of the central government. The Tamil Nadu example is the
nearest one, sir. That is, now the government, now the amendments in consent rule related to the deputation and transfer of IAS officers is one of the best examples, which reveals the intention of the center to interfere in the state administration. The center should withdraw from such unconstitutional movements, sir. Thank you, sir. Thank you, Soma Prasad ji. Now I request Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रपति जी के महामहिम के अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपना पक्ष, दल का पक्ष रखने खड़ा हुआ। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, शुरुआत यूं हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हमारे यहाँ इस रवायत की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य जो मैं सदन के अपने साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा कि 1950 में भी 31 जनवरी को ही अभिभाषण हुआ था। 31 जनवरी 1950, जब हमारे तब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से आते थे, देश के सम्मान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था। तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर, भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर, अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए माननीय सभापति महोदय। अब दिक्कत ये होती है ना माननीय सभापति महोदय कि अभिभाषण में सर्वेश्वर की एक लाइन थी सभापति महोदय, अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसी यही रख करके बात मैं खत्म करता हूं इस संदर्भ की। सर, पैरा 4
माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, जो कहता है रिमेम्बरिंग द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। सर, इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है, और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी में मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी 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 लकीर नहीं खींच सकते। एक बार चिंता करिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि बापू के राम की संकल्पना करिए। अच्छा, इससे पहले एक हल्के में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर, 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर, लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर, मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हों, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है। बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं और बहुत, बल्कि आप चश्मे पे कर दिया, आपने महदूद कर दिया। बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए, ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर, माननीय सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार, काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, 2 बेटियां थी, माता पिता 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए, उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का। ये नहीं होना चाहिए सर, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सकती। सर, समानता और बंधुत्व के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की गई है। सर मैं क्या कहूं, ये महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर है। बस मैं कहना, बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। लेकिन हमने क्या किया है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हीरो वर्शिप में तब्दील की है। आप कहिएगा पहले भी हुआ था, अरे जब पहले हुआ तो अच्छा नहीं था, अगर आज हो रहा है तो बुरा है। क्या हो गया सर, आजकल देखिए शब्दावली बदल गई है।
वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट, या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई है केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, देन डेमोक्रेसी एवरीवेयर इज डिस्ट्रॉयड एंड एवरीबॉडी विल सफर। आज भूपेंद्र जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी। मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे, ही हैज टू राइट अनदर बुक, फॉल ऑफ बीजेपी। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। प्रोफेसर जी सुनने में बहुत अच्छा लगता आपका टाइम। सर मैं बस एक आध 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। सर माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई है एक दूसरे के लिए। हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है। ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा, ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं। कहां से देशद्रोह का मामला आ गया। सर अब मैं एक एक कर करके खत्म ही करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं। सर ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, विमर्श, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है। सर गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप। अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है। 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भूखमरी, पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। ये चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझ करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शांता छेत्री जी के सवाल को खारिज करके आपने विंडिकेट कर दिया कि उनकी भावना क्या थी। सर पैरा 70 आखिरी ही है। पैरा 70 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर बिहार इसमें आता है या नहीं आता, या बिहार से 39 सांसद ले लिए, बिहार का काम खत्म। सर मैंने पहले भी कहा था, अब बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है। लालू जी के टाइम से उस सदन में बात शुरू हुई, फिर राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा भी भाजपा का बिहार विधानमंडल दल हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये खैरात नहीं है। बिहार नहीं तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में कभी 4 चांद नहीं लगेंगे, 2 चांद छूट जाया करेंगे, क्योंकि वो दोनों चांद पूर्वांचल से आएंगे। इसका आपको ध्यान रहे। सर मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया है। उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक, रहबरी के सवाल में। घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में कि दिल्ली की नीति और नीयत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान ले। और आखिरी सर ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में। मेरे दोस्त, मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है। जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक एक यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें
और आखिरी में सर प्लीज कंक्लूड। 30 सेकंड सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत आभार। मुझे मौका मिला है शिवसेना की तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कुछ अपनी राय रखने का। बहुत ध्यान से हमने राष्ट्रपति जी की स्पीच को सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, देश के सामने जो दिशा होती है वो रखने का काम किया। और उनकी भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे देश में अमृतकाल नहीं, स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। हमारे युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार हैं। हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, उनके पास सुरक्षा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ऐसा लगा कि हमारे आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं है। पर सच्चाई और हकीकत आज देश के सामने है और मैं उम्मीद करती हूं और मैं बिलीव करती हूं, स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बिल्ट बाय इनसिक्योर गवर्नमेंट्स और इनसिक्योर लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग नेशंस कैन ओनली बी बिल्ट जहां हम अपनी अच्छाई बुराई सब चीज का ब्यौरा देश के सामने रख सकें। उन्होंने किसानों की बात की। उनकी भाषण से तो ऐसा लगा जैसे किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? खुश हैं किसान, खुशहाल हैं, प्रगति हो रही है देश की। पर सच्चाई ये है कि उस भाषण में एक भी बार राष्ट्रपति जी ने देश के सामने ये सच नहीं रखा कि 700 से ज्यादा हमारे किसान ने अपनी जान दी है। और इसलिए जान देनी पड़ी है उनको क्योंकि 3 काले कानून ये सरकार ने लागू किए, प्रजातंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ करके ये कानून पास हुए और इन्हीं किसानों ने उनको मजबूर कर दिया कि ये 3 काले कानून वापस लें। पर उस भाषण में कहीं भी उन 700 लोगों के बारे में, 700 किसानों के परिवारों को किसी तरीके के लिए शोक संदेश नहीं निकल पाया। हम भूल जाते हैं किस तरीके से लखीमपुर खेरी हो या हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे किसान हो, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, कितनों को तो कुचला चल गया। पर वो मंत्री साहब के सुपुत्र आराम से बैठे हैं और मंत्री जी आए दिन यूपी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि जो संविधान की रक्षा करने वाली पद होता है, राष्ट्रपति जी का पद होता है, फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। पर किस तरीके से रोज फेडरल स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, उस पर चुप्पी बांधे रहे। पॉलिटिकल अपॉइंटीज को गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वो लोग केंद्र सरकार का एजेंडा चलाते हैं और जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। राष्ट्रपति जी ने युवाओं के बारे में भी कहा कि हमारे युवा प्रगति की ओर हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे 2014 से पहले, अभी थोड़े खामोश हैं। अगर हमारे युवा इतने खुश हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों में वो आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर केंद्र सरकार वाह भाई वाह लूटने में लगी हुई है। केंद्र सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं। आज ही मैं सवेरे सुन रही थी, इस बात पे चुप होती है। आत्मनिर्भर भारत करते करते रिकॉर्ड इंपोर्ट चाइना से आ रहा है। बेरोजगारी हमारे देश की चरम सीमा पर है। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के बारे में बात करी और हर बार सुनकर खुशी होती है कि महिलाओं के बारे में कुछ सोच है, सूझबूझ है सरकार को लेकर। पर हकीकत क्या है? वो देश की महिला
और देश की महिलाओं से एक असुरक्षित माहौल जो बन रहा है उस पे के बारे में एक चुप्पी बंधी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज नारा बेटी भुलाओ प्रचार बढ़ाओ बन चुका है। रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसकी मैं भी एक मेंबर हूं, उसमें कहा गया 85% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो प्रचार में खर्च किया जाता है। मंत्री जी ने आकर कहा 85% नहीं है, 58% है। अरे 50% से ज्यादा है और यह हमें गंभीर तरीके से लेना चाहिए कि सच में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं। पर सच्चाई ये है कि कोविड कार्यकाल में डिजिटल डिवाइड हो, गरीबी हो और महिलाओं की प्रेफरेंस कम हो, बेटियों को स्कूल से निकाला जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, पर हमारी सरकार चुप्पी बांधे हुए थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात होती है कि डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होती है, पर जब महिलाओं पे, खास करके किसी समुदाय की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, अश्लील बातें की जाती है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, ये सरकार चुप्पी बांधे रहती है। सरकार से मैं कहती रह गई, निवेदन करती रह गई कि ये मामला महिला सुरक्षा का है, पर सरकार ने किसी तरीके का काम नहीं किया। और ये आज मुंबई पुलिस है जिसने महिलाओं को सम्मान देकर वो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। ऐसे रूल्स बनने जरूरी हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस होना जरूरी है और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें कहा जाता है सर, बार बार ही कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड जीएसटी हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है, पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए हो रहा है और गरीबी रेखा में और लोगों को धकेल कर हो रहा है। और जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जो स्टेट्स हैं उनको उनका जीएसटी कलेक्शन का राइट ड्यू भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है पर उनको जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि जब हम अभिभाषण करें, हम भाषण करें, हम इन सब मुद्दों की बात रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी सर, देश के डिफेंस में, देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा जितना खर्च किया जाए वो कम है, पर वो खर्चा कर कर, देश की टैक्स पेयर्स मनी का खर्चा कर कर आप ऐसा स्पाईवेयर खरीदते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की जगह देशवासियों के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके का संज्ञान भी नहीं लेते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इजराइल खुद हो, उन्होंने पेगासस पे जांच शुरू की है और बार बार कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, हवाला देते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो बहुत सारे मुद्दे थे, पर फिर भी जब यूपीए का कार्यकाल था उस पर चर्चा आए दिन पार्लियामेंट में होती थी, पार्लियामेंट को ब्लॉक किया जाता था। तो पेगासस पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती, ये मेरी आपसे सवाल है। बिल्कुल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पेगासस में ये निकली है, जैसे मैंने कहा सारे देश उस पर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। इजराइल खुद कह रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक जो इनके यार हैं उन्होंने भी कहा है किस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। सारे देश कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, फोन मेकर्स बोल रहे हैं। एकमात्र हमारा देश है जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम महिलाओं के ऊपर पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष की नेता हो, हम उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम पेगासस डाल सकते हैं, उनके फोटोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कैमरा यूज कर सकते हैं, उनका ऑडियो यूज कर सकते हैं। एकमात्र देश हमारा है जो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो हवाला दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, शायद उनका भी नाम पेगासस की सर्वेलेंस रिपोर्ट में आया है। तो इट इज सच अ शेम कि आज उनको अपने आप को नहीं डिफेंड कर इस सरकार को डिफेंड करने पर मजबूर हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेकर चलें।
जब सबका साथ सबका विकास की बात रखी जाती है तो सही मायने में हर वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो या कोई भी ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, वो सब आपके देशवासी हैं, इंडियंस फर्स्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना कर्तव्य उनके विकास की ओर, उनकी सुरक्षा की ओर और उनकी सारी जो उम्मीदें हैं इस देश से और इस देश की सरकार से, उसको पूरा करने का कर्तव्य आपका बनता है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म कर कर ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों पे कर रही है उसको बंद करे और सही मायने में देश का जो सही दिशा और दशा है उसको तय करें। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। Thank you. Now I call upon Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. 12:30 is... No, you can take your time. You can take your time. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. The customary annual address of the Honorable President of India to the members of both the houses of Parliament has certain constitutional sanctity. Sir, the main stakeholders to ensure such developed and modern India over the next 25 years are the state governments. Our country is a union of states. The state governments are primary agencies of the implementation of various developmental and welfare projects, initiatives, both central and state governments. Nobody disputes the fact that all-round development progress of our country critically dependent on the effectiveness of the state governments. So, Honorable Chairman, sir, the limited time available to me, I would like to place on the record on my concern that my party TDP as to how the present state of affairs and this in my state of Andhra Pradesh are proving to be a big hurdle realizing the dream of India that Honorable President evinced in his address to all the MPs on 31st of this month. I am sorry to state with the responsibility that the Andhra Pradesh is just in a state of total collapse. The Andhra Pradesh government is miserably failed in respect of parameters like administration, financial management, law and order that I have earlier referred in the progress. I would elaborate the same, sir. The state finances are utter chaos. The state government is just thriving on borrowing every day. Due to last 2.5 years, the state government has borrowed over 3.5 lakhs crores, various sources, and there is no proper accounts where the money is there. New corporations are being created just the sole purpose of borrowing the funds to raise or spent on activities for which such corporations are set up. There is huge unauthorized diversion of funds. The August House will be stunned to know the borrowings have been made, making the Honorable Governor as a guarantor by the name of the individual capacity. Sir, situation is so bad in the state of Andhra Pradesh. The employees are not being paid in time. Pensions are out in state daily distress as they did not get their pensions in time. Reflecting the measure in the state of financial state, the further report last pay revision commission, the employees of the state-wise now getting lower salaries. This because of the state government has not made any public policy. The PRC report, and instead of acting the recommendations of the committee, now the employees are served a strike notice and are now taking roads against the state government. Sir, I feel ashamed to share that the August House that the Andhra Pradesh government is not sparing the poor and the weaker sections in mobilizing the resources to run the day-to-day governance. To give an example, the poor and the weaker sections have built small houses year back are now being faced to pay about 10,000 each other under one-time settlement scheme. The large number of volunteers engaged by the state governments are being forced to foul means to collect the monies from the poor and weaker sections. The honourable members will be shocked to know that the state government has mortgaged revenues from liquor sale for a period of next 25 years to raise borrowings. This is being done by the ruling party, and that has promised during the election campaign of 2019 that liquor was banned gradually. In effect, the Andhra Pradesh government is running, pleasing the poor and weaker sections. The central government, through present address that we are now discussing, has called infrastructure development. I am sorry to say, my fellow members, that productive industrial economic activity in my state has come to a virtual halt. The Honourable President referred to study increase of GST revenues. The tax revenues has also substantially increased in recent times. Logically, revenues to my state have also been on rise. Still, infrastructure development has come to a complete halt in the state. Not even a kilometre of existing roads has been repaired since 2019, leaving alone laying roads, new roads. Accidents due to
due to poor roads and the attendance death are daily occurrence in my state. The poor are the worst hit due to a lack of basic transport infrastructure. The YSRCP government unmoved the situation so bad, there is no response by the contractors to tenders floated by the state government. It because they knew that the state government will not pay the works done by with the government running on daily borrowings. Under the important Jal Jeevana measures, 500 crores has not been paid to the contractors. For the works done during the previous TDP government and the YSRCP government did not pay thousands of crores payment due to contractors, including Narega works. All funds have been diverted. It is only after a long legal battle, finally under the orders of the High Court, some payments were made. So the contractors are not... Ravindra Kumar ji, please stop your speech. You will continue on Monday. ठीक है ना? Obliged. जो your remaining part of the speech, that will you cover please on Monday. Obliged. Thank you. The time is over already. So now it's a private member business. Private member bills. Honorable members, just your attention please. During the private members legislative business day of the last session on the 3rd December 2021, Professor Manoj Kumar Jha, member, had opposed without giving any prior notice the motion moved by Sri K.J. Alphonse, member, for leave to introduce his private member's bill, namely the Constitution Amendment Bill 2021, Amendment of Preamble. He had argued inter alia that preamble is part of the basic structure of the Constitution and the bill may not be allowed for introduction. He had also referred to Rule 62(2) of the Rules of Procedure and contended that such bill, which did not have the previous sanction or recommendation of the President, cannot be introduced in the House. It was clarified on that day by me that Rule 67 of the Rules of Procedure states that if a motion for leave to introduce a bill is opposed, the chairman, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion may, without further debate, put the question for the decision of the House. It was also informed that a decision on the motion for leave to introduce a bill had to be taken by the House and not by the chair. However, on a request made by the Minister of State for Parliamentary Affairs and after taking the sense of the House, the introduction of the bill was deferred. Preamble is part of the Constitution and as per Article 368 of the Constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any provision of the Constitution, and a bill for the purpose can be introduced in either House of the Parliament. There are a number of instances in past when private members' Constitution amendment bills to amend the preamble have been introduced in both the Houses of Parliament, and they are on records. As already clarified by me on that day, that is on 3rd December 2021, if the introduction of a bill is opposed on the ground of legislative competence of the Council decides the same and not the Chair. There are a number of rulings given by the Chair in this House on this issue, taking the same stand in the past. I would like to quote a couple of them. On 4th September 1959, the then Deputy Chairman Rajya Sabha gave the following ruling, and I quote, Sri Bhupesh Gupta has introduced a bill for amending the Representation of the People's Act 1951. The Law Minister raised a point of order that the bill is ultra-virus of the Constitution as it indirectly seeks to amend the Constitution by introducing a provision for recall under the guise of disqualification under the Representation of the People Act. This objection was not taken at the introduction stage, but I still feel that there is a strong force in the objection raised by the Law Minister and it may amount to an amendment to the Constitution. But the Chair has never taken the responsibility of deciding the ultra-viruses or otherwise of a bill. There have been several decisions of the Chair in this connection. In fact, on 23rd April 1951, when an objection was taken in the Provisional Parliament to the Forward Context Regulation Bill that it was ultra-viruses of the Constitution, the Speaker observed. The position which I had made clear was that the question of ultra-viruses will not be decided by the Chair, but that it may be left to the House.
If it comes to the conclusion that it is ultra vires, the House may reject the bill. If the House accepts the bill for consideration, then the party aggrieved has his remedy in the Supreme Court or other courts. Therefore, I said it was no use going in detail into questions of constitutional niceties, because after all, these are things which can best be argued by lawyers, and it is not proper to take the time of the House over this long discussion of niceties. Again, in 1953, when the constitutionality of the Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill was raised, it has been observed, in all these matters, the Speaker has never taken upon himself the responsibility of deciding the point of order when it is constitutional or otherwise. It is for the House to take this also into consideration in voting down the bill or accepting it. Under the circumstances, I leave it to the House to accept or not to accept the bill, unquote. In another occasion, on the 11th May 1963, the then chairman, Rajya Sabha, gave the following ruling, and I quote, I thank the honorable members for the assistance they have given me in coming to a conclusion. Prima facie, I think we can go on with the discussion, but I do not wish to give any ruling, because in the central legislature, it has been the accepted practice for the chair not to take upon itself the responsibility of deciding whether the House has the legislative competence to entertain a bill or whether a bill is ultra vires. When any such question is raised, the usual practice has been to leave the matter for the decision of the House. The main reason for the adoption of this course is that a question relating to the legislative competence of the House or the constitutionality of the proposed legislation often involves much difficulty and complexity, and it is the function of the courts and ultimately of the Supreme Court to decide such a question. The presiding officer should not arrogate to himself the functions of the court, especially as he has not facilities or material on which to come to a satisfactory decision. It is the sole privilege and duty of the House to decide every question that arises on a motion moved by a member. So if the matter is left to the House to decide, the House may reject the bill if it is of the view that the bill is ultra vires. If, however, the House accepts the bill, the party aggrieved will still have the remedy in the courts and ultimately in the Supreme Court. This question came before the central legislatures on various occasions, and the accepted practice has been as stated by me, unquote. As regards the objection raised by Professor Manoj Kumar Jha, under Rule 62(2), the bill does not have the previous sanction or recommendation of the President. I may clarify here that there is no such requirement for introduction of the bill under reference. Therefore, there is no question of any doubt on the admissibility of the bill for introduction seeking to amend the preamble to the Constitution. Be that as it may, the bill has been listed in today's agenda for introduction. The House may decide about the manner of disposal of the motion when the motion for introduction of the proposed Constitution Amendment Bill 2021, amendment of preamble, is moved by Sri K.J. Alphonse. Thank you. Sir, I do not think that the House itself also has any mandate or is competent to amend the preamble of the Constitution. Neither the Council of States nor the House of the People. Nor the House of the People. So it's very clear that what is enshrined there, it's not a question of tinkering with the basic structure. There are umpteen judgments of the Supreme Court also on that cannot be. And various governments, if they have come up with any constitutional amendment which has been challenged and questioned, they have been cast aside by the Honorable Supreme Court. Here we are talking of the very preamble of the Constitution. So I would say, rather urge the member concerned also, that in the larger interest of this country, where questions are being raised about the integrity of our commitment to the Indian Constitution and its preamble, this should not be entertained. Thank you. Thank you, Mani Anandji. Please. Yes, please. Point here, sir. So we also know that two changes were brought in the preamble to the Constitution by the 42nd Amendment in this country, sir.
two words, socialist and secular, were inserted into the preamble. So it is not that the preamble cannot be changed. Thank you. Mani Sukhendu Sekhar. Sir, I support the views expressed by Mr. Anand Sharmaji and Manoj Jhaji. In Keshavananda Bharati case, the Honorable Supreme Court, they decided inter alia that sovereignty of Parliament is there, but the supremacy of the Constitution cannot be ruled out. So, whether it is Parliament or any other constitutional or statutory authority, they have to abide by the Constitution. Since the point raised by Anand Sharmaji and the other speaker who has said about the constitutional amendment, that is altogether a different thing, and it happened long back before the judgment delivered in Keshavananda Bharati case. Absolutely. Therefore, that judgment of Keshavananda Bharati is still subsisting, and I would request the chair not to allow this. Mani Sadasya, please. Sir, the question I think here is that whether we can add a sentence to the preamble or not, but whether the basic structure of the Constitution can be amended or not. The country believes, the Constitution believes that these words is a part of the basic structure that can be challenged. Supreme Court and the Parliament many a times told them that. Now a time has come when somebody is coming here to change the Constitution and the basic structure. That can't be allowed. Yes, Abdul Wahabji. You are the last speaker now. Because I will close it. Please, no. Please. No, it's not open discussion. This one, amendment of Constitution. Okay, the bill came. Where is the proposer? Sitting in the Central Hall? Thank you. माननीय सदस्यगण, चेयर की पोजीशन इसमें क्या है मैंने क्लियर की कई रूलिंग से, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड, कोटेड 4th September 1959 ruling. Number 2, yes, again in 1953 Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill, such matters were settled here by ruling. Again on 11th May 1963 the ruling was very clear. So far as chair's role is concerned, so chair, the house can decide or the court can decide, not the chair. That is. Please take your seat. No, I have not allowed. Let us close this discussion. Mani Anand. I am moving. Please. You have already availed your occasion. Please. I have already clarified the position. One sentence. Sir, everyone sitting here, whether it's the government, the ministers, Honorable Chair, and all of us have sworn by this Constitution as members when we are sworn in. Thank you. Can we then change the preamble? Thank you. माननीय सदस्यगण, ये सारे जो हमने रूलिंग्स कोर्ट के, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे प्रोविजंस यहाँ रूलिंग में दिए गए हैं सिंस 1951. So I am not going on detail. Private members legislative business bills for introduction. The Uniform Civil Code in India Bill 2020. Dr. Kirodi Lal Meena. Just wait. Yes, please. Dr. Kirodi Lal Meena, not present. Since he is not present, not moved, I am not going to allow any discussion on this. Yes, you had. Dr. Amar Patnaik, the Constitution Amendment Bill 2020, Amendment of Preamble and Article 51A. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2020. So I, Dr. Amar Patnaik, move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India for insertion of the word ahimsa in the preamble to the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill.
The Lokpal and Lokayukt's Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Lokpal and Lokayukt's Amendment Bill 2021. So I, Dr. Amar Patnaik, rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Lokpal and the Lok Ayuktas Act 2013. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Ayes always have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. So I rise to introduce a bill further to amend the Central Educational Institutions Reservation in Admissions Act 2006 to provide for reservation for students from government schools in central educational institutions. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien ji, not absent. The Criminal Laws Amendment Bill 2021, Dr. Prashant Nanda to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code of Criminal Procedure 1973. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Prashant Nanda ji. I introduce the bill. Thank you. The Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021, Sri Subhash Chandra Singh to move for leave to introduce the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021. Sri Subhash Chandra Singh. Not present. Sri Subhash Chandra Singh. Absent. Sri K.J. Alphonse to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sri K.J. Alphonse. Absent. Dr. V. Sivasan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend Constitution of India. Constitution Bill 221 Amendment of the Preamble. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sivasan. I introduce the bill, sir. Thank you. The Right to Health Bill 2021. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the Right to Health Bill 2021. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I move for leave to introduce a bill to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living of a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, thank you. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2021, Sri Elamaram Karimji to move for leave to introduce the Indian Penal Code Amendment Bill 2021. Thank you, Deputy Chairman. I, Elamaram Karim, to move for leave to introduce a bill further to amend Indian Penal Code 1860.
The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Ela Maram Karim ji. Introduce the bill. Thank you. The Labour Codes Repeal Bill 2021. Sri Ela Maram Karim ji to move for leave to introduce the Labour Codes Repeal Bill 2021. Sir, I move to leave to introduce a bill to repeal certain enactment related to Labour's Code. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Ela Maram Karim ji. I introduce the bill. The Council of Climate Change Bill 2021. Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Council on Climate Change Bill 2021. Thank you, Chairman, sir. I rise to move for leave a bill to provide for the establishment of the Council at the centre and in each state and union territory for climate change action and the matters connected therewith or incidental thereto. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Epidemic Diseases Amendment Bill 2021. Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave a bill further to amend the Epidemic Diseases Act to keep in mind the significance of clear and consistent public health emergency law. Thank you, sir. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Darjeeling Sports University Bill 2021. Srimati Santa Chetri to move for leave to introduce the Darjeeling Sports University Bill 2022. Srimati Santa ji from Lok Sabha. Thank you, sir. I, Srimati Santa Chetri, to move for leave to introduce the bill to establish and incorporate the Darjeeling Sports University in the state of West Bengal. Thank you, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Santa Chetri ji. Yes, sir. I introduce the bill. Thank you. The Crop Diversification Corporation of India Bill 2022. Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Crop Diversification Corporation of India Bill 2022. Absent. The Victim Impact Statement Bill 2022. Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Victim Impact Statement Bill 2022. Not present. Absent. The Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169. Dr. Fauzia Khan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169. Chairman, sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, Article 168 and the omission of Article 169. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fauzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Criminal Laws Amendment Bill 2022, Dr. Fauzia Khan to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fauzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Dr. Fauzia Khan to move for leave to introduce the Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to ensure proper rehabilitation and relief to victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fauzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson. Thank you, please. Deputy Chairman, sir. In the year 1976, the state's power to legislate on education, including technical education, medical education and universities, was taken away from List 2 by constitutional amendment and same was kept in List 3. The bill seeks to restore and partition the power over these subjects parallelly between the state and the central, following the true spirit of cooperative federalism. For that purpose, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, namely the 7th Schedule. Thank you, P. Wilson ji. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri P. Wilson ji.